पहले हमने define research, what is research and what are the characteristics of research को discuss किया हुआ है. Please go through this. Goals of psychological research की बात करें तो goals of psychological research में first of all क्या क्या goals होते हैं psychology के research करने के, क्या क्या पड़ाव होते हैं. बेसिकली हिंदी में मैं बात करूँ as already discussed above, हमने जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसर्च जो होती है वो नॉट अ रैंडम एक्ट. ये कोई भी एक रैंडम एक्ट नहीं है. रिसर्च आप करोगे तो पहले आप उसके बारे में नॉलेज गेन करोगे, फिर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप उसको प्लान करोगे एंड इन्वेस्टिगेट करोगे, जब जाके कहीं आप रिसर्च के पर उतरोगे और फिर उसको करोगे, स्टार्ट करोगे. तो रिसर्च इज़ अ very मतलब research is a very significant process, not a random process. Research aimed to describe, understand and predicting, even controlling human behavior. Let's understand this with an example. अब इसे समझते हैं, चलिए एक example से. Let's understand this with an example. Imagine a psychologist. Imagine करिए कि एक psychologist है जो बहुत curious है about why. वो जानना चाहता है कि क्यों स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई एंजाइटी लेवल बिफोर एग्जाम. ये सबको होता है कि एग्जाम्स आता है तो स्टूडेंट को हाई एंजाइटी हो जाती है. तो कोई साइकोलॉजिस्ट है जो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक वन साइकोलॉजिस्ट वो रिसर्च करना चाहते हैं कि व्हाई स्टूडेंट एक्सपीरियंस हाई एंजाइटी लेवल बिफोर एग्जाम्स. की क्यों स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले हाई एंजाइटी लेवल हो जाता है. मान लो किसी का बोर्ड का पेपर हो गया, 10th हो गया या अंडर ग्रेजुएट, इस एग्जाम से पहले क्यों मतलब एक एंजाइटी होती है, चिंता होती है या दुश्चिंता होती है. इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेशंस, इंस्टेड बिना किसी स्पेकुलेशंस का मतलब क्या होता है. तो स्पेकुलेशंस मीन्स अनुमान. अनुमान मीन्स मान लेना. तो मैं बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्पेकुलेशन का मीन्स होता है अनुमान, या बिना किसी अजम्पशंस के या बिना उन अनुमानों को. अजम्पशंस मीन्स मान्यता देना. तो बिना उन अजम्पशंस को मान्यता दिए रिसर्च कैन बी कंडक्टेड. इसमें कोई स्पेकुलेशंस एंड अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए. स्पेकुलेशंस मीन्स अनुमान एंड assumptions means मान्यता. रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट. और रिसर्च को कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें. तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही तो हम रिसर्च करेंगे ना कंडक्ट. उनका एक काइंड ऑफ सर्वे होगा कि आप सबके से जो रिसर्च कर रहा होगा वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा कि आपका टाइम टेबल कैसे है, एग्जामिन देयर स्लीपिंग पैटर्न्स, आप कितने बजे सोते हो, एग्जामिन देयर स्लीपिंग पैटर्न्स, फाइंड आउट देयर फाइंडिंग, उनकी स्टडी हैबिट्स क्या है, उनके इमोशनल रिएक्शंस क्या हैं. The study may reveal that sleep deprivation. स्टडी में ये भी निकला है कि स्लीप deprivations भी आती हैं. एंड fear can be two chief contributors. और failure और fear can be two chief contributors. कौन से? sleep deprivation जो यहाँ पे sleep deprivation and failure fear can two chief contributors. The information might help in designing the interventions for such cases. Mindfulness training. अगर जो भी रिसर्च कर रहा है वो माइंडफुली ट्रेनिंग लेगा एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को रिकमेंड करेगा उन स्टूडेंट्स को. सच एस काइंड ऑफ रिसर्च अलो इन्वेस्टिगेटर्स टू अप्लाई द इंसाइट्स टू एक्चुअल सिचुएशंस, बी इट्स इन्वॉल्विंग scholastic performance, building healthier works atmosphere or encouraging mental well-being. Let's dig deep and discover these goals through psychological research in greater detail one by one. The first of one goal is to describe behavior, means description. An important goal of research is to systematically define and describe behavior. ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है. इसमें हम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप
डिफाइन करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियर को, इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रिप्शन. This involves recording details information about what is happening in a particular scenario. Pertinent information like people involved, place of occurrence, and conditions under which that particular behavior occurs should be recorded carefully. मतलब just like उस पर्सन को एक सिनेरियो में पुट अप कर देंगे, तो उस पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन को हम इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अपने रिसर्च में कि उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे, उस कंडीशन पे वो पर्टिकुलरली कैसे बिहेवियर कर रहा है उस ऑकरेंस में, और वो हम रिकॉर्ड करेंगे. हम मीन्स रिसर्चर जो होता है. द डिस्क्रिप्शन प्रोसेस emphasizes on recognizing and recording a particular event or behavior. For example, how investigators might study how bystanders respond when someone unexpectedly collapses in a supermarket. Do they rush to help, wait for someone else to act, or simply walk away? This kind of observation help to understand how group size, perceived responsibility, or presence of authority figures can influence helping behavior. Okay. Up second is this, to explain behavior. To explanation is also the key goal of research. Once behavior is described, अब हमने describe कर लिया है. Once behavior is described, the next goal is to explain why it occurs. अब next goal तो यही है, explain करेंगे why it occurs, to uncover the underlying causes and psychological mechanisms behind it. अब हमें एक्सप्लेन ये करना है कि अनकवर करना है कि आपने उस सिनेरियो में ऐसा बिहेव क्यों किया, अंडरलाइन कॉज क्या थे उसके, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बिहाइंड इट. Taking the shopping mall example further, if most outstanders did not have the person who collapsed, researchers might investigate why. Was it due to the diffusion of responsibility, where individuals assume someone else will intervene, or perhaps fear of doing wrong thing, lack of first aid of knowledge, or social influence from others around them? The stage moves beyond just observing behavior. It seeks to understand why behind human actions. Okay. इसमें बेसिकली हम पता लगाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उसने उस सिनेरियो में ऐसे, रिसर्चर्स नोट डाउन करेंगे कि इस सिनेरियो में ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, इसके मैकेनिज्म्स क्या है पीछे, गोल्स ऑफ इंटेंशंस काइंड ऑफ ये पता करना हो गया. और डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर रहे थे, तो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व कर रहे थे टू गेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या करना है. और अब हम एक्सप्लेनेशन में क्यों कर रहा है ये जानेंगे, तो एक्सप्लेन करेंगे उसका बिहेवियर, तो एक्सप्लेन बिहेवियर. अब थर्ड इज the third goal of research is prediction. Prediction is also another key goal of psychological research. Is prediction, which builds upon the behavior that have previously described and explained. अब prediction वर्ड जो हमने previously describe कर चुका है, पहले भी हमने predict क्या हुआ था, explain क्या हुआ था उसे. For example, if studies consistently, अगर आप consistently study करोगे, show that the presence of a large number of bystanders decreases the likelihood of individuals offering help, a phenomena is known as bystander's effect, then we can reasonably predict that in similar future situations, such as medical emergency in a crowded area, people will be less likely to intervene. These predictions are crucial for anticipating behavior and planning effect interventions. Up the fourth
Goal of psychological research, and it is also another vital object of psychological research, is to influence or control behavior, especially when the goal is to promote well-being or prevent harm. Once behavior is predicted, researchers work on developing interventions, strategies, and training programs to guide or modify those research behaviors in a positive way. For instance, if research predictions if research predicts that people are less likely to help in emergencies due to the bystander effect, psychologists may design awareness campaigns or emergency response training to encourage individual action. Even in a crowd, the application of research helps bridge the gap between theory and the real life impact. Okay, so let's explore the fifth point is also very gentle. It's the application. The final and the most crucial goal of psychological research is as application in real life settings. Research holds little value of its findings can be used to solve everyday problems or involve quality of life. Applied research ensures that knowledge translates into meaningful change, making knowledge truly impactful beyond textbook or labs. Okay, इसके बाद हमें देखना होगा स्टेप्स इन रिसर्च. देयर आर मेजरली 7 to 8 स्टेप्स. वो हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च में. So let's try to understand in the same video. First, goals of research is basically psychological research is a short topic. Although research can often feel demanding and exhausting. Although वैसे रिसर्च होती है वो often feel हमें अक्सर लगता है कि demanding है और exhausting है. जो उसको प्रोसेस होता है becomes much more manageable and even enjoyable when the researchers follow the well structured. ये जब enjoyable भी हो जाती है और manageable भी हो जाती है जब जो researcher होता है वो follow well structured step by step approach, gaining familiarity with the key stages of psychological research equips you to navigate the journey with confidence and clarity. और जो वो navigate करते हैं अपनी psychological research की journey को भी confidence और clarity से navigate करते हैं, making the path to discover. ऐसा path बनाते हैं जिसमें वो discover कर सके smoother and more rewarding. Psychological research given below is a detailed explanation and the key steps involved in conducting psychological research. The step number first is identifying the problem. First of all, identification of the problem. The first and the most crucial step in the research process is identifying a clear and meaningful research problem. A research problem is generally presented as a question that seeks to explore or to understand a specific phenomenon. ये फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. पहले वो अपनी रिसर्च की आइडेंटिफाई करेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप यही होगा इस रिसर्च का कि वो उनको आइडेंटिफाई करके क्लियर करे, मीनिंगफुल रिसर्च प्रॉब्लम बनाए उन्हें. A research problem is generally presenting a question. रिसर्च प्रॉब्लम एक जनरली क्वेश्चन होगा एंड जो सीक्स हो मतलब जो हमें सीख करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा while selecting a topic is it important to ensure that it is a flexible, manageable within available resources and time and aligns with your personal interest and the area of expertise. Everyday observation, academic experience, social problems, conflict and gaps in existing knowledge are the major sources of research problem. तो क्या क्या sources हैं? Everyday observation, academic experiences क्या क्या है ये भी vary करता है.
सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, कन्फ्लिक्ट एंड गैप्स क्या क्या हो सकते हैं, इन एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, and the major source of no research problem. Observe the problem is recognized, exploring the issue in depth through a literature review is the next essential step. It encompasses gathering pertinent information from the authentic sources such as academic articles, books, research journals, and databases. A well-researched literature review boost your understanding of the issue, clarify significant variables, make acquainted your with our research designs and standardized tools used in a previous similar researches, and clarifies precautions to be taken. It is also prepares you well in advance, possibly obstacles learning from the shortcomings mentioned in the earlier research. Besides that, a comprehensive review of the past researches help prevent the unnecessary replication of unnecessary replications of the idea of the earlier work and enable identifying overlooked or less explored area of the future interventions investigations. Above all, literature review helps in recognizing gaps which can become the center of your present research, assisting in the creation of clear research goals and testable hypotheses. In the way, a strong base for conducting meaningful and effective research can be established with the help of the thoughtful selection of the research problem coupled in rigorous literature review, stating the problem and formulating of hypothesis. तो हाइपोथेसिस क्या होता है, आप पहले भी हमने इसका ओवरव्यू ले रखा है. आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टडीड मेटिकुलसली, the next vital step is stating the problem and formulating the hypothesis clearly. A hypothesis can be defined as a tentative and testable statement or prediction about the relationship between variables in any conditions. Your assumptions and your personal beliefs should be not the guiding force for hypothesis formulation, rather than existing literature and past research findings should be the base. At the stage, hypotheses should be carefully framed to maintain objectivity and avoid biases throughout the research problems. Alternating or conducting hypotheses after data collection should be strictly avoided as it compromises the integrity of the study. Identifying, manipulating, and control of variables. Once the research problems have been stated and hypotheses formulating, the next crucial step is to identify and define the variables included in the study. A variable refers to any characteristics or condition that can be manipulated or controlled or measured by the researcher. There are several types of variables that play distinct roles in research. The independent variable is one of them. Is investigator knowingly changes or manipulates to observe its effect. It is named independent because the researcher is independent to make independent, because the researcher is independent to changes it in it or and to control it. On the other hand, the dependent variable is the fact to which investigator is interested. It ranges or per manipulations used to interdependent variables. For example, if research is studying the effect of the temperature, for example, if research is studying the effect of the temperature, and it's clear cut, we have underlined the 8 major steps of psychology.
medical research. Okay, let's cover in another video and another session. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel for getting more valuable information. Thanks for watching.